This is my second video, and today we're going to talk about the dogmatism of the algorithm. Now, as for this topic, I was also so invested in this topic because I was thinking about it the other day, and I was like, I know that this topic sounds very formalized and it sounds very hard. I don't know, just the dogmatism of the algorithm. It sounds very, I don't know, unconventional to look at. But like actually, when I look through it and when you discuss it, it's just like the random stuff that happens daily in your life, and you don't notice is like here what we're talking about basically is the dogmatism. डॉगमेटिज्म बेसिकली एक टर्म होती है फिलोसफी में, पॉलिटिकल फिलोसफी में इस्तेमाल होती है फैलेसी के तौर पे, जहाँ पे वो बताते हैं कि किस तरह एक इंसान जो है अपने किसी मतलब एक दूसरे इंसान से इन्फ्लुएंस होता है। कोई वो पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, कोई उसका अपना मानने वाला रोल मॉडल हो सकता है, जो कि हो सकता है कि उसको उसके पॉइंट ऑफ व्यू का इतना इल्हाम ही ना हो कि वो कि कौन सी लाइक जिसको आप कहते हैं इंटेंसिटी या डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस रखता है, both in the positive way and the negative way, but they just blindly follow it and they are ready to incorporate those values or differences, those substances in their life, even when they don't, they're not even aware of what may be the consequences or what may be the aftermath of these all that they're doing, because like they have very strong belief into these parties or these people or these like whatsoever you call them. I mean, आपको example दिया for the influencers and the political parties, politicians, जैसे ये वो वाली चीज़ भी cover करती है what we're talking about, कि बहुत सारे लोग हैं पॉलिटिकल हॉस्टैलिटी क्यों होती है, वो कुछ चीज़ों को हजम क्यों नहीं कर पाते, तो उसमें वही चीज़ भी आ जाती है। सो ये डॉगमेटिज्म का वर्ड है, वहाँ से लिया गया। एंड अबाउट द एल्गोरिथम, आई थिंक सो मेनी ऑफ यू विल बी अवेलेबल वुड नो अबाउट द एल्गोरिथम स्टफ के, जो आप फ़ोन देखते हो, जो आप रील स्क्रॉल करते हो ऑन द इंस्टाग्राम या इस तरह का कुछ, या फिर जो आपके अब तो यूट्यूब्स पे भी वो आ गए हैं शॉर्ट्स वगैरह जहाँ पर आप करते हो, तो वो आपकी एल्गोरिथम हुई। जो आपको यूट्यूब पे सजेशन आते हैं वो आपकी एल्गोरिथम है। जो आपको ईमेल्स पे जो आपको रिकमेंडेशन आते हैं, स्पॉन्सर्स आते हैं, कोई लिंकेज होता है, तो वो भी आपकी एल्गोरिथम है। लाइक ऑल द स्टेप्स, ऑल द मटेरियल दैट यू आर गेटिंग फेड अपॉन on the social media platforms is what your algorithm is made up of, and this is what we're going to discuss today. So coming up, I like मैंने आज इस बार के लिए इस टॉपिक के लिए सिर्फ 2-3 स्लाइड्स ही बनाई थी, because I also recognize the fact that I'm not very good with like keeping up with the slides. So I just thought that I'll just make one or two and I'll just give a very extensive briefing upon those two, because I don't think so I can do otherwise. So about the interface thing, interface is basically उसका background ये है कि जब digital age की बात करते हो, like first of all I don't know if it's like something very something that's very weird that you were not aware of, is that कि हमने ये चीज़ नोटिस की होगी that nowadays our parents they हमें झाड़ते हैं या फिर they scroll us upon कि आप बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, that happens in our daily life। आपके पेरेंट्स आपको उन चीज़ों के बारे में झाड़ते हैं। लेकिन अबाउट द लाइक जब यहाँ पर किताबें नई नई छपना शुरू हुई थी, जब इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रिंटिंग शुरू हुई थी, जब प्रिंटिंग इंजीनियर्स जो थे वो ये सारा काम कर रहे थे, जब वो नई नई बनी थी और जब आपकी किताबें छपना शुरू हो गई थी, तो उस वक्त भी एक ज़माना था जहाँ पर लोग बच्चों को इस बारे में डांटा करते थे कि आप तुम इतनी किताबें ना पढ़ो, तुम्हें लत लग जाएगी। लाइक लाइक स्पेशली इन इंग्लैंड वगैरह इस तरह के जो रीजन्स थे, और जहाँ पर जो पेपर छपना हुआ था, तो चाइना लाइक इस तरह की जगह पे तो वो लोगों को, अपने बच्चों को डांटा करते थे कि तुम इतनी किताबें ना पढ़ा करो, तुम्हें इसकी लत लग जाएगी। And now the scenario is even like the total opposite, but in a weird way also, कि अब आपको क्या कहते हैं, इस बात की तारीफ सुनने को मिलती है that you're reading something, that you are involved into books, even though if the stuff that you're reading is haram. I don't know why did I say that, but the kind of stuff that you're reading does not matter. अगर आपको बस reading ऐसा शौक है, तो people do get impressed that okay, you are a reader, you read a lot of stuff, but in the, so I think so this is something कि डिपेंड करता है। पिछले ज़माने में उनके कुछ और तरीके थे और यहाँ पे इस वक्त कुछ और है, तो इस वक्त दे गेट हैप्पी, दे आर सेटिस्फाइड, दे आर इम्प्रेस्ड व्हेन यू टेल देम दैट यू मतलब यू लाइक रीडिंग एंड एक्सेट्रा। लेकिन जो आजकल का आप देख रहे हो उसमें आम से ज़्यादातर फ़ोन्स वगैरह ही होते, तो उसी पे झाड़ पड़ती है। बट आई थॉट दैट इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू शेयर यू दिस फैक्ट। और उसके अलावा जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपकी एल्गोरिथम होती है वो किस तरह मॉनिटर होती है, चलो इसके बारे में तो हमें सबको पता है कि आपकी एल्गोरिथम किस तरह मॉनिटर होती है, आपको जो भी सजेशंस मिलते हैं
आपकी जो भी हिस्ट्री होती है, all the stuff that you search on the web, that is being recorded, and that's what makes your algorithm. Why is it okay, so there comes a very, important factor over here, is that like even if you refer to the psychological pattern over there, कि यहाँ पर जो youngsters हैं और जो पुराने ज़माने में जो लोग होते थे उनमें differences क्या है, और आपको लगेगा ना like कुछ लोग ऐसे होते हैं, like I'm just taking a very niche example of like everyday life, कि लोग आपको कहते हैं कि आजकल के बच्चों को सब कुछ आता है, आजकल के बच्चों को सब कुछ पता है, दे नो अबाउट एवरीथिंग एंड ऑल, इस तरह के जो लोग कहते हैं। और पुराने ज़माने में मतलब इतनी विजिबिलिटी नहीं होती थी, इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी। तो हेयर्स द थिंग अबाउट एल्गोरिदम, कि अगर आपको लगता है ना बिकॉज ऑफ द स्टफ दैट यू सीन ऑनलाइन कि आपको दुनिया से आप बहुत क्या कहते हैं, उसको उर्दू में इसका क्या लफ्ज़ होता है, इंकशार होते हो, that is not true because the algorithm that you're being fed upon is made up of your own views। मतलब आपको क्या लगता है कि वो आपको कोई ऐसी चीज़ दिखाएंगे जो आपके ऑपोजिट व्यूज़ होगी, इवन व्हेन यू थिंक कि आप बहुत ओपन माइंडेड हो रहे हो, या फिर आपको 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 लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लाइक एजुकेशनल या फिर इंस्टीट्यूशनल या फिर इस तरह का मतलब you are more focused upon those kind of stuff, even then you are not instigated with that, क्योंकि आपको आप you don't notice that kind of pattern, you don't have that kind of realization because you are the victim over here, so you won't realize it until you know कि जिस पर आप उस पर heavily effect नहीं होना शुरू हो जाता है, उससे पहले आपको इस चीज़ का असर नहीं महसूस होगा। और इसमें वही फिर दोबारा चीज़ है दैट even when you think कि आप बहुत ज़्यादा like you're getting out of your comfort zone, और उसके बारे में you're open minded about views, that is not really true because even with that you're bounded by a bubble and you cannot get out of it, because you will be get fed upon the stuff that you look at, you will be get fed upon the videos that you give more stream time to, you will have all this kind of stuff with you, so you can never get out of this loophole which is created due to this environment where you're getting fed upon the algorithm। और especially with Instagram and stuff, you would also know that जो videos का time span होता है काफ़ी छोटा होता है, और this is also something that we have, पहले लोगों का time span बहुत ज़्यादा होता था, they were able to concentrate more मतलब एविडेंटली वो कर लेते थे कॉन्सेंट्रेट 2-3 घंटा, बट अभी आई थिंक जो रीसेंट रिसर्चेज आई हैं उसमें यही सामने आया है, एंड आई थिंक सो दैट वाज वेरी ऑब्वियस एंड यू पीपल आर आल्सो अवेयर ऑफ इट, कि आजकल जो आपके जिस तरह से आपके जा रहे हैं हालात, आपके जो लाइफ स्पैन, नॉट लाइफ स्पैन, बट आई एम कंफ्यूजिंग इट, बट दैट आपका जो टाइम स्पैन है ऑन द ऑल दीज एप्स, आपका जो limitations about how much concentration can you give to a particular source of media has decreased very exponentially। और ये क्यों होता है, ये से what do you think so what it is? I think so that is I think so we have also studied about this, कि आपके जो ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। अच्छा, जो अबाउट डोपामीन, बहुत लोग इसको इस तरह रेफर करते हैं कि दिस इज द काइंड ऑफ neurotransmitter that is released, the chemical that is released within your brain due to when you are feeling happy। but इसमें थोड़ी सी मैं confusion clear कर दूँ, even though I'm not an expert, obviously I have not studied that deeply, but जो serotonin होता है ना, that is the type of neurotransmitter that is released when you get actual happiness, जब आपको कुछ खुशी का एहसास होता है। डोपामीन तब आपको मिलता है जब जैसे this is the same kind of hormone that gets released when you are like involved in drugs and stuff, and basically what it does, it excites your brain, it activates your brain, it it just excites your brain, that is the best possible explanation I can give for this one। और यही चीज़ होती है जब आप मतलब शॉर्ट स्पैन की वीडियोस अपने फ़ोन पे चलाते हो, यू गेट एक्साइटेड, आपको होता है कि अच्छा अगली वीडियो क्या होगी, अच्छा ये अच्छी नहीं, अगली वीडियो अच्छी होगी, ये वाली अच्छी होगी, और देन यू कीप spamming and spanning, and then you are just never out of this cycle। So this is the thing that happens with this kind of media। और इसके अलावा like I've not even prepared any points, I'm just speaking out on behalf of my institutive thoughts, so that's all that we're doing over here। और इसके अलावा they're not always neutral also, yeah, this is the same thing that I've told you earlier also, that about this dopamine release and about this scrolling thing, so we're just gonna move forward। Okay, here I would just like to mention one thing that is quoted by Friedrich Nietzsche, and where he states that कि वो इतना पढ़ा करते थे। Friedrich Nietzsche, if any of you don't know about it, is also a philosopher,
He is a philosopher who is the author for the gay science, if you know about it. And I think उनके और भी बहुत सारे popular writings हैं, but अभी मेरी खोपड़ी में कुछ भी नहीं है, so I don't remember any of that. But he's a very famous philosopher. Especially, I remember this one writing I read of him was Beyond Good and Evil, and he used to talk about all these kind of stuff. And I think so he was progressive but limited progressive. जैसे वो वाला progressive नहीं होता जिसमें अभी वो कहते हैं कि मेरी बेटी बहुत progressive है. I don't know why this is such bad dad jokes, but that kind of progressive where you would say कि मैं तो बहुत progressive हूँ, I let my daughter out till 7 p.m. but उसके बाद वो घर आ जाए. So that is the thing कि वो बहुत आगे जाएगी, लेकिन जहाँ भी जाएगी 7 बजे से पहले वापस आ जाएगी. Rums, I have such dead humor. मैं कहीं नहीं जाने वाली इस humor के साथ. But whatever is the whatever is up with me, I'm gonna continue anyways. Bro, मैंने अपना पोपट करा दिया, but I'm gonna continue anyways. But जो भी है, I'm not gonna record this again. Okay, calm down, calm down. जिसमें वही चीज़ आ जाती है. उसमें उन्होंने जब कहा था Fretting Nation है that he used to sit on table and he used to think a lot. He used to read a lot. वो बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे, बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे, बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे. और वो इतना पढ़ा करते थे कि उन्होंने फिर ना ब्रेक ली थोड़ी सी 1 हफ्ते के लिए. और फिर उन्होंने इसमें ये चीज़ रियलाइज़ की कि वो इतना जितना पढ़ रहे हैं ना उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जितना पढ़ोगे इतना पढ़ोगे इतना पढ़ोगे आपकी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग कम हो जाएगी. दिस इज़ ऑल्सो द लाइक सम ऑफ द फंडामेंटल थिंग्स दैट यूज टू फोकस अपॉन कि आप जितना भी पढ़ लो आपके पास अपना इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए. अगर आपके पास वो ख़त्म हो रही है तो इतना पढ़ने का क्या फ़ायदा. विच इज़ आई विल स्टिल ब्रिंग अप द पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम. मैं खुद मेट्रिकुलेशन की स्टूडेंट हूँ, बट फिर भी मतलब क्यों होता है ऐसा नहीं होना चाहिए. बिकॉज यू जस्ट इन्फो स्टैकिंग. द वर्ड दैट आई यूज्ड हियर आल्सो इज कॉल्ड इन्फो स्टैकिंग. कि आप बस पेल रहे हो नॉलेज, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है. ठीक है, इसमें बस उसी चीज़ के ऊपर बात की थी. फिर उन्होंने यही कहा था दैट यू शुड हैव टाइम टू थिंक ओवर सर्टेन थिंग्स इन लाइफ. कुछ भी हो जाए, आपने कुछ किसी भी बारे में सोचना है, कोई रैंडम चीज़ है, आपको कुछ लाइक लिटरली एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग. बट ही जस्ट सेज कि अगर आप पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, चाहे वो आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप पढ़ना छोड़ दो, लेकिन इसका मतलब बस ये है कि आप इन्फो स्टैकिंग इतनी ज़्यादा कर दो, आप बाकियों का जो उन्होंने लिखत पढ़त की है वो इतना करो कि आपके पास अपनी जहनीत ना हो, आप अपने से कुछ प्रोसेस ना कर पाओ इतना ज़्यादा. और इसी बात पे आ जाती है कि अपने आप को आपको टाइम देना चाहिए और इतना ज़्यादा रील्स भी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि फिर इससे आपकी एक तो आपकी इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाती है, एंड देन यू गेट मिक्सड अप इन द क्राउड, देन देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड द क्राउड. सो या, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट द डॉगमेटिज्म ऑफ द एल्गोरिथम. और इसके बारे में आई थिंक सो कि दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस, बिकॉज लाइक मैं उसके बारे में नहीं जा रही थी पहले, बिकॉज आई वाज लाइक कि उसके बारे में डिस्कशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. But like even with the Pakistani education system, the one that I talked on earlier in my former video, I remember, उसमें भी यही था that आपको डोपामिन रिलीज हो रहा है. मतलब कोई कह रहा है कि उसके like I recently remember that डकी भाई वो जो whatever that फजूल घट, like I could not say that word. Maybe he'll get my video cancelled. He will never reach my video, but even if he does, he'll get me cancelled. So whatsoever is that, I would just like to criticize him a bit. क्या आपने मतलब जो भी उन्होंने हरकत की हैं, और उसके बाद रजब बट फैमिली समथिंग लाइक दैट. सो इस तरह की जो वीडियोस होती है, दे आर ऑल्सो गिविंग यू अ डोपामिन शॉट. आप उनको देख रहे हो और उसको देखने की वजह से आपको डोपामिन रिलीज़ होता है आपके ब्रेन में, क्योंकि ऑल द वियर्ड काइंड ऑफ स्टफ दैट दे आर डूइंग. कोई अपने भाई का रिजल्ट अनाउंस कर रहा है और कह रहा है उसने फैमिली का नाम बदनाम कर दिया है. कोई बता रहा है कि उसकी बकरी चोरी हो गई है. कोई बता रहा है कि पानी में से नाला नहीं आ रहा, नाले में से पानी नहीं आ रहा. तो all these kind of stuff, I just feel like कि they are instigating your brain and that is the only reason you're watching that. वरना किसी के पास भी, जानवर के पास भी, गीदड़ के पास भी, अगर थोड़ी सी इन्नी चाहिए भी अकल होना, ऐसे फजूल हरकतें ना करें और ऐसी फजूल वीडियोस पर अपना टाइम ज़ाया ना करें. And I also do get that the fact that most of the audiences that make up the subscribers, you call it, for these channels are those who are mainly children, right? बच्चे होते हैं जो उनकी वीडियोस देखते हैं, लेकिन कुछ बड़े भी होते हैं. और मुझे बस डर लगता है इन बड़ों से कि आप बड़े हो के इनकी वीडियोस देखते हो. लाइक रियली, बच्चे तो फिर भी बच्चे हैं यार, आपको किस कुत्ते ने काटा था. बट विद दैट नोट, खुदा हाफिज़.